नंबर 7 है कि कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए फ्रॉम पेरेंट्स या गार्डियन से जब पर्सन इनकेपेबल हो थ्रू एज या थ्रू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। इंडिया में पर्सन ऑफ एंड अबव 12 ईयर्स ऑफ एज कैन गिव कंसेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, यानी 12 साल की उम्र से ऊपर वाला। जब कंसेंट ऑब्टेन कर लिया जाए, नेक्स्ट पॉइंट है कि तो एग्जामिनेशन शुड whenever possible be made in the presence of a third person, preferably फीमेल नर्स हो, स्पेशली जब मेल डॉक्टर एग्जामिन कर रहा हो फीमेल पेशेंट को, एंड वाइस वर्सा। किसी भी प्रोसीजर में जो अफेक्ट करे राइट ऑफ स्पाउस को, जैसे कि स्टरलाइजेशन, हिस्टेरेक्टोमी या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्सेट्रा, तो इन्फॉर्म कंसेंट इज फ्रॉम द सच स्पाउस शुड बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड। नंबर 10 है कि सेक्शन 53(1) में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड an accused can be examined by a medical practitioner at the request of police even without his consent and by use of force if there is reasonable ground to believe that such examination will afford evidence as to commission of an offence. The examination may include taking of fluids in cases of intoxication. Section 53(2) ले करती है कि whenever female is to be examined, तो examination shall be made only या फिर under the supervision of a female registered medical practitioner. सेक्शन 54 CRPC के अंडर अरेस्टेड पर्सन जो है एग्जामिन होगा बाय डॉक्टर एट हिज रिक्वेस्ट टू डिटेक्ट द एविडेंस इन हिज फेवर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलिस्ट्रेटिव केसेस। केस 1 है नेसेसिटी ऑफ अ कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन। द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट इज स्ट्रेस्ड इन एन इंडियन केस, जिसमें क्वेश्चन वॉज वेदर अ पर्टिकुलर लेडी वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द defendant to suit. The trial court directed that the defendant should be sent to a doctor for the medical examination to ascertain whether an issue had been born to her. The order was challenged and the appellate court held that in as much as the medical examination of lady, if not voluntarily consented to by her, would amount to assault and battery, the order of lower court directing a medical examination was invalid. Next है केस 2 कंसेंट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। A patient who had been bitten by a poisonous snake was not warned by his physician of the possible hazards in receiving the snake bite serum. He suffered ill effects. He was not, however, allowed damages because of emergency nature of the situation. Third case है कि treatment without consent. Surgeon flatly denied to patient that he was going to remove her breast. When she awoke from surgery, she discovered that her breast was removed. She was allowed to recover damages from the surgeon on ground that the defendant had performed a completely unauthorized operation, and this amounted to assault and battery. Number 4 है non-validity of the blanket consent. Female patient entered the hospital for an appendectomy. Surgeon removed the appendix and then, while she was under the general anesthesia and without her prior consent, performed a total hysterectomy, the surgeon noticing the fibroid uterus and holding the surgeon liable for damages despite the blanket consent form signed by the patient. The court observed that the so-called authorization is so ambiguous as to be almost worthless, and certainly so, since it fails to designate the nature of the operation authorized and for which consent was given. It was pointed out that though it may be convenient for a surgeon to correct unrelated condition discovered during the course of operation in the absence of emergency threatening the life of a patient, the surgeon should not attempt to extend the surgery beyond the scope of patient's consent. Case 5 है necessity of informed consent for diagnostic procedures. Patient had injured his neck in the fall. Several months later, he re-injured his neck while he was in the automobile. His physician recommended that he undergo a diagnostic procedure known as myelogram. The patient claimed that the physician told him the procedure was merely exploratory and that he had nothing to worry about. He further claimed that he suffered a herniated disc during the procedure, which caused foot drop. He contended that the physician failed to inform him of the risk. The question, the court said, is not whether the reasonable medical practitioner would have disclosed the risk of foot drop,
The question is whether or not the physician disclosed the sufficient information to enable the patient to intelligently decide whether to undergo the myelogram. If he did not, the court ruled he would be liable for all injuries sustained by the patient as a result of procedure. Number 6 is consent by fraud. Patient's legs and ankles were badly burned और ulcerate हो गई as a result X-ray treatment की वजह से for eczema. He alleged that if the defendant physician had made known to him that there was a great danger that X-ray treatment might result in the burn and ulcer, he would not have permitted the treatment, and the injuries complained of would have not have occurred. He further alleged that the defendant physician misled him not only by failing to warn him of the danger but also by affirmatively assuring him that the X-ray treatment would cure his eczema within 8 weeks. The defendant physician was held liable. Next is case 7, duty of disclosure and its extent. 19-year-old man was experiencing severe pain between his shoulder blade. Myelogram ने reveal किया filling defect in the region of 4th thoracic vertebra. Neurosurgeon ने recommend किया कि man undergo a laminectomy prior to the operation. Neurosurgeon did not inform the man or his mother that the laminectomy involved the risk for paralysis. Patient sued the neurosurgeon for damages. Regarding paralysis as a risk of laminectomy, neurosurgeon testified that there was only a very slight possibility. Paralysis can be expected somewhere in nature 1% of all cases. He further testified that it was not good medical practice to inform the patient of risk of paralysis. The disclosure of this risk might deter the patient from undergoing the laminectomy that they needed, or that it may cause an adverse psychological reaction that could decrease the possible success of the operation. Neurosurgeon was held liable. Court ruled that in all uncommon treatment or procedure, doctor has a legal duty to inform the patient of risk of death or serious bodily injury. Case 8, duty of disclosure and its extent. A patient who was given a pint of blood in connection with dilatation and curettage developed serum hepatitis. She alleged that the defendant hospital was negligent in failing to warn her of the risk of contracting serum hepatitis. The court said, considering the frequency of use of transfusion, the nature and extent of the risk involved in comparison with the alternative risk, the possible detrimental effect of advising the patient of risk, and the general practice in local medical profession not to so advise patients, the court feels impelled to conclude that the defendant did not have a legal duty to plaintiff to advise her in case that serum hepatitis might be communicated. Case 9, alternative treatment. Without advising the patient with prostatic disorder that the recommended surgery would inevitably sterilize him or that there was another method of curing the disorder, the surgeon operated. In upholding the jury award of damages to the patient, the appeals court held that in the absence of an emergency, the patient should have been advised of all alternatives by the defendant's surgeon. He had a right to be given a chance to make up his own mind as to the alternative he preferred. Next is case 10, consent for the treatment of a particular doctor. Patient was operated upon for the hernia by a house surgeon instead of an experienced and senior surgeon. The patient alleged that he had been shocked that the apprentice had operated upon him without obtaining his consent when he had engaged a skilled craftsman. It was, however, admitted on the patient's behalf that the operation had been performed in an entirely competent manner. It was held that the house surgeon had operated without the plaintiff's consent, and that for an unauthorized person to do so was highly technical form of trespass. Although house surgeon had behaved in accordance with the traditions in his profession, as there had been technical trespass, patient was awarded nominal damages amounting to 20 shillings. Case 11 है कि what constitutes informed consent. Patient underwent electroshock and insulin subcoma therapy for severe depression and anxiety complicated by alcoholism. He consented orally to treatment beforehand
There was no question of mental incompetence. The treatment, which was not immediately necessary to save his life, was carried out by qualified medical staff competently and without the negligence. In the course of treatment, the plaintiff suffered fractured vertebra during the convulsion. Through all reasonable precautions had been taken to prevent this. Medical evidence was given that shock therapy carried a high risk of fracture. One doctor assessed it at 18%. The plaintiff did not complain that the treatment was recommended by good medical practice or that it was not competent, nor did he deny that he had given consent. He brought an action on the ground that he had not been informed of the inherent risks and dangers, and that the doctors had been negligent in not giving him this information. He said that he would not have consented had he known of hazards. The court considered the following fact. Number 1, risk of the fracture were matters of fact and not the speculations. Number 2, risks were high. Number 3, the incidental hazard of the fracture was not a danger which the ordinarily patient would know about without special information. Number 4, there was no emergency. Number 5, the patient was not mentally incompetent and could understand explanations. And number 6, there is reason to believe that the plaintiff would not have consented to treatment had he known of dangers. It was held that a prima facie cause for action and negligence was established. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिटेल में ड्यूटीज़ ऑफ अ पेशेंट. व्हेन अ पेशेंट एम्प्लॉयज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज एलमेंट, उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, तो ही हैज़ द फॉलोइंग ड्यूटीज़. नंबर 1, उसको डाइवर्ज करनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ऑफ अ केस. पेशेंट जो मर जाता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, मर गई एक पेशेंट, उसने फिजिशियन को बताया कि शी हैड नो इंटरकोर्स सिंस हर लास्ट चाइल्ड वॉज बोर्न. He made a diagnosis of ovarian abscess. Relative of the deceased did not succeed in getting the compensation from the doctor. नंबर 2, पेशेंट कोऑपरेट करना चाहिए प्रैक्टिशनर के साथ इन रिगार्ड टू रिकमेंडेड लेबोरेटरी एड, जैसे कि एक्सरे, कार्डियोग्राम एक्सेट्रा, जो कि ज़रूरी होती हैं डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए. नंबर 3, पेशेंट को सारी इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करनी चाहिए एज रिगार्ड द ड्रग्स, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज, और रिपोर्ट करना चाहिए टू द प्रैक्टिशनर एज ऑफन एज एडवाइस्ड. नंबर 4, उसको पे करनी चाहिए प्रैक्टिशनर को फॉर हिज सर्विस अनलेस इट इज़ अंडरस्टूड टू बी फ्री. While a registered medical practitioner may sue in a court of law for the recovery of fee due to him, failure on the part of the patient in connection with the other duties would free the practitioner of any responsibility for the result of his treatment. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को डिस्कस करें डिटेल में. मेक अ ब्रीफ रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. दूसरा सवाल है डिस्कस करें सिविल नेग्लिजेंस को गिविंग द एग्जांपल, और डिस्कस करें क्रिमिनल नेग्लिजेंस को गिविंग एग्जांपल. सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. विद ए प्रोफेशनल पर्सन, वर्ड नेग्लिजेंस का स्पेशल मतलब है, ये डिफाइन होता है कि ओमिशन टू डू समथिंग, यानी एक्ट ऑफ ओमिशन जो कि जिसको रीजनेबल पर्सन वुड डू और डूइंग समथिंग. एक्ट ऑफ कमीशन विच ए रीजनेबल पर्सन वुड नॉट डू. कॉन्सिक्वेंसेस जो नेग्लिजेंस के हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्सेट्रा, वो कवर होते हैं इंडिया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. रेफ़र करें टू द प्रिकॉशन अगेंस्ट द नेग्लिजेंस. जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है यानी मैल प्रैक्टिस या मैल प्रैक्टिस, वो डिफाइन होती है एज अ लैक ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल या विलफुल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट वेयर बाय द हेल्थ या फिर लाइफ पेशेंट की इन डेंजर हो. ये मियर नेगलेक्ट नहीं है या केयरलेसनेस, ये नेगलेक्ट है या केयरलेसनेस है वेयर देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर एंड फेलियर इन दैट ड्यूटी कॉज डैमेज, इंजरी. Any want or proper skill or care that causes the patient's death, diminishes his chances of recovery, prolongs his illness, or increases his suffering constitutes the injury in a legal sense. However negligent a doctor may be, the patient is not entitled to any compensation if no damage has occurred. It is not possible to lay down any fixed standard for medical care, but the degree of a skill that a practitioner should bring to the treatment of his patient is the average degree of skill possessed by his professional colleague of the same standing as himself. कोई भी error diagnosis में या treatment में is not the negligence provided proper care and skill has been exercised.
A specialist duty expect who to possess the specialized knowledge and skill might be held negligent in respect of treatment, which when given by a general practitioner could be regarded as satisfactory. यानी स्पेशलिस्ट के लिए ज़्यादा जो है वो नेग्लिजेंट कहलाएगा. टर्म डैमेज का इन एन एक्शन फॉर द नेग्लिजेंस हैज़ आल्सो अ स्पेशल मीनिंग. ये डिस्टिंग्विश करनी चाहिए फ्रॉम द डैमेजेस. डैमेज पेशेंट को फिजिकल हो सकता है, मेंटल या फाइनेंशियल. ये इंक्लूड करता है सच अ रादर नेब्यूलस कंसेप्ट जैसे कि पेन एंड सफरिंग, जो कि क्लियर अप करती है रिमार्केबली क्विकली वंस द केस इज सेटल्ड. डैमेजेस असेस्ड होते हैं बाय द कोर्ट अंडर द नंबर ऑफ डिफरेंट हेडिंग्स, यानी कि लॉस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग पावर ऑफ द डैमेज पर्सन, actual medical and surgical care cost, and the reduction in the quality of life which may be caused by lameness, deafness, blindness, and so on. In order to achieve the success in an action for the negligence, plaintiff यानी कि patient या उसके representative must be able to establish to the satisfaction of the court that number one, defendant यानी doctor owed him a duty to conform to a particular standard of conduct. Number 2, defendant was derelict and breached that duty. Number 3, the plaintiff suffered actual damage. And number 4, defendant conduct was the direct or proximate cause of incurred damage. If he can prove this, he is entitled to damages in term of money. Generally speaking, ये patient के लिए है in an action for negligence to establish the guilt of a doctor whose innocence is otherwise assumed. There is a certain comparatively uncommon circumstances in which the doctrine of res ipsa loquitur, मतलब कि it speak for itself, वो इन्वोक हो सकती है. 3 essential condition कंसीडर होती है नेसेसरी. नंबर 1, नेचर इंजरी के सजेस्ट बाय द कॉमन नॉलेज या एक्सपर्ट एविडेंस दैट विदाउट द नेग्लिजेंस इट डज नॉट अकर. नंबर 2, प्लेंटिफ जो है मस्ट नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज ओन इंजरी. नंबर 3, डिफेंडेंट जो है मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़. इस तरह के केसेस में एरर सेल्फ एविडेंट है कि अगर केस आता है ट्रायल, डॉक्टर हैज़ टू एस्टेब्लिश हिज इनोसेंस रादर देन द पेशेंट्स हैविंग टू प्रूव द डॉक्टर्स गिल्ट. एन एग्जाम्पल इज अफोर्डेड बाय द केस ऑफ कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसमें प्लेंटिफ ने अंडरगो किया ऑपरेशन 1948 में फॉर द रिलीफ ऑफ डिपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर अफेक्टिंग 2 fingers of one hand and by an experienced full-time surgeon of the hospital. Hand was splinted for some 14 days, लेकिन when the splint was removed ये पता चला कि 2 previously affected fingers जो हैं वो still bent हैं और stiff हैं, एंड बाकी जो 2 अदर फिंगर हैं वो भी अफेक्ट हुई हैं. तो मैक्सिमम रेस इप्सा लोकेटर का सक्सेसफुली प्लीड हुआ इन दिस केस. Lord Justice Denning said that patient went to the hospital to be cured of 2 stiff fingers, but has come out with 4 stiff fingers and his hand is useless. That should not have happened if due care had been taken. The doctrine of res ipsa loquitur has been held applicable in the medical professional liability action, chiefly in cases of foreign bodies and splintering instrument, in the surgical procedure, burns from heating modalities, injury to a portion of the patient's body outside the field of treatment, and gross prescription error of the toxic drugs. An action for the negligence in such cases may be brought against a medical practitioner in a civil या फिर criminal court में as a case may be. और जो negligence है accordingly known हुई as a civil या criminal negligence, it can also be a form of subject of inquiry by the medical council and even action under the Consumer Protection Act. अब पढ़ते हैं सिविल नेग्लिजेंस यानी कि मेल प्रैक्टिस. ये क्वेश्चन अराइज करता है नंबर 1 के कब पेशेंट या इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ उसके रिलेटिव्स ने सू किया डॉक्टर को इन अ सिविल कोर्ट फॉर कंपनसेशन फॉर द इंजरी या डेथ ऑफ द पेशेंट एज द केस मे बी ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर. और नंबर 2, कब डॉक्टर ने ब्रिंग किया सिविल सूट को फॉर द रियलाइजेशन फॉर हिज प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द पेशेंट और हिज रिलेटिव्स हु रिफ्यूज टू पे द सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ मेल प्रैक्टिस. यानी कि ये कब हुआ उस पर देखते हैं. फेलियर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय डॉक्टर व्हेन ही एग्रीड टू ट्रीट अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट्स मेल प्रैक्टिस.
Burden of proving the negligence and damage resulting therefrom lies with the patient, save the exception already mentioned. Question है कि whether there has been a want of competent care and competent skill to such an extent as to lead to bad results. Following are some examples. जैसे डायग्नोसिस, ये डिफ़िकल्ट होता है कि जस्टिफाई करें फेलियर टू एक्सरे अ केस ऑफ इंजरी टू द बोन या जॉइंट्स जिसमें डाउट हो डायग्नोसिस के बारे में, और इस तरह का फेलियर फ्रीक्वेंटली बेसिस होता है सक्सेसफुल प्ली का इन एन एक्शन फॉर द नेग्लिजेंस. विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑप्थेल्मोस्कोप का डायग्नोसिस में ऑफ द कंडीशन जो कि एसेंशली नहीं होती ओक्यूलर, फेलियर टू यूज़ एन ऑप्थेल्मोस्कोप या रेफ़र करें पेशेंट को किसी स्पेशलिस्ट में, वो रिगार्ड होगा एज ए नेग्लिजेंस. मेडिकल डिफेंस यूनियन हैड अ केस जिसमें डॉक्टर फेल हुआ टू डायग्नोज अ क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा विथ फैटल रिजल्ट. प्रैक्टिशनर ने नहीं देखा एविडेंस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑप्थेल्मोस्कोप से, and this fact weighed heavily with the council in deciding to settle the case. Though it is doubtful if the doctor could have made the diagnosis of raised intracranial pressure had he looked, but there can be no doubt that in view of presenting symptom and sign, he should have known that such an investigation should be undertaken by some competent person. Failure to suggest consultation with a specialist under certain circumstances may be regarded as negligence. यानी अगर हम स्पेशलिस्ट को साथ कंसल्ट ना करें तो ये भी नेग्लिजेंस है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में. ट्रीटमेंट, कुछ जनरल गाइडलाइंस याद रखनी चाहिए. एज फॉर एग्जांपल, एवरी केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड वाइल यूजिंग द डेंजरस ड्रग, और एक्सेसिव एक्सपोजर पेशेंट का टू द रेडिएशन अवॉइड करना चाहिए. फॉलोइंग कोर्स क्लोरामफेनिकोल का फॉर द सिस्टाइटस विथ अ टोटल डोज 45 ग्राम का द पेशेंट डेवलप कर गया ए प्लास्टिक अनीमिया. In the view of the dosage and the circumstances जिसमें ये दिया गया, the claim by the widow and her children was settled for pounds. Boy sustained an injury by a pellet from an air gun. During an operation to remove it from his arm, an unsuccessful attempt was made to locate the slug by repeated X-ray screening. 5 days के बाद एरिथमा हो गया स्किन का ऑफ हिज आर्म, जो कि फॉलो हुआ विथ लार्ज क्रोनिक अल्सर जो रिक्वायर कर रहा था प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट एंड प्लास्टिक सर्जरी. ही वॉज लेफ्ट विथ परमानेंट स्कारिंग एंड लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ हिज आर्म. तो ये केस भी सेटल हो गया फॉर पाउंड 3000. नेक्स्ट है ड्यूटी टू वार्न. प्रैक्टिशनर को वार्न करना चाहिए पेशेंट को कोई भी प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट किसी ड्रग का या डिवाइस का. अगर फेलियर होगा टू डू सो तो रेंडर करेगा प्रैक्टिशनर को लायबल फॉर द हार्म जो सफ़र करेगा पेशेंट जिससे सफ़र करेगा, एंड द इंजरीज कॉज टू द थर्ड पार्टीज, जैसे कि वाइल ड्राइविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक या वाइल ऑपरेटिंग मशीनरी. नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स. ये नेसेसरी होता है कि सर्टिफिकेट ट्रू हो टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नॉलेज एंड बिलीफ. ही शुड फुली सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट the accuracy of the statement contained therein, and especially so if the certificate is based on the statement made by others, as for example mental illness में जैसे होता है. नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट. इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न बनाई जाती है फॉर द डिसेबिलिटीज़ जो सफ़र होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस वाइल इन सर्विस, प्रोवाइडेड द वर्कर हिमसेल्फ वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी और वॉज नेग्लिजेंट. मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बुलाए जाते हैं टू डील विद सच अ वर्कमैन शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू दिस एक्ट. नंबर 1, दे आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई रिलेटिंग टू फिटनेस या अनफिटनेस फॉर द वर्क. नंबर 2, प्रैक्टिशनर को ओपिनियन देना चाहिए और एविडेंस अपॉन विच के डिपेंड करता है डिसीजन कि वेदर इंजरी जिससे वो वर्कमैन सफ़र कर रहा है इज़ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट वाइल एट द वर्क. नंबर 3, प्रैक्टिशनर रिक्वायर है टू सर्टिफाई द एक्सटेंट ऑफ द डिसेबिलिटी वर्कमैन का जो अराइज होता है फ्रॉम द एक्सीडेंट या फिर इंडस्ट्रियल डिजीज़ से. पेमेंट कंपनसेशन की टू द इंजर्ड वर्कमैन लार्जली डिटरमाइन होती है फ्रॉम सच अ सर्टिफिकेट. उस सर्टिफिकेट की ही बेसिस पे मतलब पेमेंट मिलेगी उस वर्कमैन को. द सर्टिफाइंग ऑफ सच अ केस इज़ नॉट एज ईजी एज द यूजुअल इंजरी सर्टिफिकेट. वर्कर जो है वो मेलिंगर कर सकता है और फॉल्स क्लेम बना सकता है, और he might have developed a neurosis after the accident.
जब तक कि डॉक्टर जो है वो सस्पिशियस माइंड तक हो और अप्रोच ना कर पाए केस को, तो वेरी थोरो एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है, कीपिंग द वर्कर अंडर द ऑब्जर्वेशन इफ़ नेसेसरी टू असेस द डिग्री ऑफ द डिसेबलमेंट। नेक्स्ट है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये क्वेश्चन अराइज करता है इन केस ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी टू द पेशेंट एट्रीब्यूटेबल टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस या फिर अनड्यू इंटरफेरेंस बाय डॉक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। इन द केस ऑफ डेथ, doctor may be prosecuted by the police and charged in a criminal court with having caused the death of his patient by a rash and negligent act amounting to culpable homicide under section 304A IPC, if the death was the result of gross ignorance, gross carelessness, gross negligence या फिर undue interference by him in his professional duties। इस तरह के केसेस जनरली होते हैं ड्यू टू ड्रंकनेस या इम्पेयर्ड एफिशिएंसी, किसी ड्रग के यूज़ किए जैसे बाय द डॉक्टर। इन द केस ऑफ सीरियस इंजरी, डॉक्टर जो है वो चार्ज होता है अंडर द सेक्शन 33(6), 33(7), 33(8) IPC। डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस मस्ट बी सो ग्रेव एज टू गो बियॉन्ड अ मैटर ऑफ कंपनसेशन। फॉलोइंग इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, ग्रॉस केयरलेसनेस, ट्रीटमेंट के दौरान, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नंबर 2 है नॉट डूइंग द सेंसिटिविटी टेस्टिंग when indicated। नंबर 3, बेसल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करना इन अ फैटल डोज में या फिर रॉन्ग टिश्यू के अंदर। नंबर 4, रॉन्ग फिंगर की एम्पूटेशन कर देना, ऑपरेशन रॉन्ग लिम्ब में करना या रॉन्ग ऑर्गन को रिमूव कर देना या फिर लाइगेशन रॉन्ग डक्ट्स की कर देना। इसके अलावा है ऑपरेशन किसी रॉन्ग पेशेंट पे करना या स्पंजेस या इंस्ट्रूमेंट्स को एब्डोमेन में छोड़ देना या किसी और बॉडी पार्ट में, टॉर्निकेट को बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ देना, इन्फेक्टेड ब्लड लगाना, गैंग्रीन हो जाए आफ्टर टू टाइट प्लास्टरिंग या फिर पैरालिसिस आफ्टर द स्प्लिंट, ड्रेसिंग करना विद कोरोसिव इंस्टेड ऑफ द ब्लैंड लिक्विड्स। इसके अलावा अब क्रिमिनल अबॉर्शन करना या क्रिमिनल ऑपरेशन करना, मिसमैनेजमेंट डिलीवरी की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रग्स। इन द केस ऑफ ग्रेट मैन, death of a woman in childbirth was ascribed to gross negligence